One is the direct conflict. Then occupied field, for which there is already a law and you make another law on that. ठीक, एक तो दोनों का आपस में टकराव, या एक में पहले लॉ है उसी सब्जेक्ट पे, यू मेक अनदर लॉ ऑन दैट. Then should say do and what the other legislation says don't. That is what? Direct conflict. If I say do and the other fellow says don't, there is direct conflict. Right? Now, second, this occupied field is when both legislations cover the same field. एक पे लॉ है और दूसरे पे भी उसी फील्ड पे लॉ बना दिया गया. राइट? ये कई बार आता है टेस्ट ऑफ रिपग्नेंसी, और बड़ा सिंपल है कोई इसमें मुश्किल बात? मैं हाँ कहूँ आप ना कहो, कॉन्फ्लिक्ट हो गया. आप पहले एक कुर्सी पे बैठे हो, मैं आपके उछल के आपकी गोदी में बैठ जाता हूँ, वो ऑक्युपाइड फील्ड हो गया. तो कॉन्फ्लिक्ट तो दोनों केस में है. Direct inconsistency, again in this case, it has been mentioned. So they cannot operate together, right? There can be no repeal by implication unless inconsistency appears on the face of the two statutes, where the two statutes occupy a particular field, but there is room or possibility of both the operating it. अब मान लीजिए ठीक है, आप ट्रेन की सीट पे बैठे और दूसरा आगे धक्का देके बैठ जाता है साथ में, दोनों के लिए जगह है, सीट एक ही थी बट समहाउ दे कैन बी एडजस्टेड. दिस इज वेयर दिस ऑपरेटिंग इन द सेम फील्ड विदाउट कमिंग इनटू कोलिजन विद ईच अदर, नो रिपग्नेंसी. भी दोनों आराम से चलो सफर कर लो. ठीक? एनी डिफिकल्टी इन दिस? Where there is no inconsistency but a statute occupying the same field seeks to create distinct and separate offences. ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने सारे एस्पेक्ट कवर किए रिपग्नेंसी के. Now that they operate in the same field but they create separate offences, no question of repugnancy and both will operate. They're not coming into conflict.